बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. How are you third year class? I hope you will be fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and I hope you enjoying very safe and sound health. Ameen. Dear students, welcome back to studies, and let's start our today's lecture. That you know that we were studying our chapter number 5, Take Pity, and we are almost at the end of the story. Okay, dear students, let's start. Then I made up a scheme that I was a friend of Axel's who lived in Jersey. I said I owed Axel $700, that he lent me this money 15 years ago, before he got married. Okay, students, now we can see that Rosen, he tried his every effort to help Eva, but Eva, she was a very stubborn woman. She did not accept his any offer, any help, and she continuously refused. But he was a very good person, and he tried to help Eva in every way. So, what did he made? An other idea that I was a friend of Axel's who lived in Jersey, that he was the friend of her husband. ठीक है, उसका जो husband था बेटा, उसका नाम Axel था, and who had died. So he thought that if he would send her the money in this way, so she may accept it. ठीक है, हो सकता है कि वो इसको कबूल कर ले, उसको पता ना चले कि ये रोज़न भेज रहा है. So उसने इस तरह से कोशिश करी उसको पैसे भेजने की. I said I owed Axel $700, that he lent me this money 15 years ago. कहता मैंने इस तरह से कहा कि एक्सेल जो है मैंने उससे $700 लिए थे, जो कि शादी से पहले थे, 15 years ago की बात है, before he got married. Okay, I said I did not have the whole money now, but I would send her every week $20 till it was paid up the debt. कहता मैंने उसको कहा कि मेरे पास तो अभी पूरी रकम नहीं है, लेकिन मैं उसको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजता रहूँगा, ताकि जो है वो मेरा डेट जो है वो मेरा लोन है वो क्लियर हो जाए. ओके, सो आई पुट इन साइड द लेटर 2 10 एंड गेव इट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल्सो अ सेल्समैन. ही शुड मेल इट इन न्यूयॉर्क सो शी वुड नॉट बी सस्पिशियस हु रोट द लेटर्स. ठीक है बेटा, ये तक कि मैंने इस तरह से इन्वेलप में कुछ पैसे डाले, और इवन उसने एक सेल्समैन को दिए जो कि उसका दोस्त ही था. ठीक है, तो उसने उसको जो है वो मेल किए न्यूयॉर्क में, ताकि वो सस्पिशियस ना हो जाए, इसके बारे में ये ना हो कि उसको ये पता ना चले कि ये रोज़न ने पैसे भेजे हैं. टू रोज़न सरप्राइज, डेविडो हैड स्टॉप राइटिंग. अब रोज़न, चूँकि डेविडो जो था उसका दोस्त था बेटा, वो लिख रहा था सारा कुछ, सो ही स्टॉप राइटिंग. द बुक वॉज फुल, सो ही टॉस्ड इट इन टू द टेबल, yawned, but listened him amiably. Amiably मीन इन अ फ्रेंडली मैनर. ठीक है, बड़े दोस्ताना तरीके से उसकी बात सुन रहा था. उसने बुक रख दी क्योंकि वो फुल हो चुकी थी. सो हिज क्यूरियोसिटी हैड डाइड. अब उसकी जो क्यूरियोसिटी थी बेटा, तजस्सुस था, वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है. रोज़न गॉट अप एंड फिंगर्ड द नोटबुक. ही ट्राइड टू रीड द स्मॉल डिस्टॉर्टेड हैंड राइटिंग. ओके बेटा, डिस्टॉर्टेड मीन आउट ऑफ शेप, टेढ़ी मेढ़ी जिसको हम कहते हैं. सो उसने वो उसको टेढ़ी मेढ़ी जो राइटिंग थी उसको पढ़ने की कोशिश की, बट कुडंट मेक आउट अ सिंगल वर्ड. लेकिन उसको किसी भी वर्ड की समझ ना आई. It's not English and it's not Yiddish, he said. Could it be in Hebrew? Okay, बेटा, these are the names of languages. So Yiddish mean language of America. तो कहता है उसने डिफरेंट लैंग्वेज के पूछा कि ये तो ना तो इंग्लिश है ना यिडिश है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है, क्या ये हिब्रू में है? No, answered Davido. It is an old-fashioned language that they don't use it now. It nowadays. कहता है ये old fashioned language है जो कि पहले यूज़ होती थी. Now it is not used nowadays. अब ये आजकल यूज़ नहीं होती. Oh, Rosen returned to the cot. He saw no purpose to going on now that it was not required, but he felt he had to. Okay, अब जो है ही रिटर्न टू, वापस कॉट की तरफ आ जाता है, वापस आके बैठ जाता है. ही सॉ नो पर्पस टू गोइंग ऑन नाउ. अब उसको ये लग रहा था कि शायद बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, दैट इट वाज नॉट रिक्वायर्ड बट ही फेल्ट ही हैड टू. लेकिन उसने महसूस किया कि उसको अपनी बात जो है वो पूरी करनी चाहिए. केम बैक ऑल द लेटर्स, ही सेड डली. ओके, डली मीन स्लोली. अब वो बड़े आहिस्ता से कहते हैं कि सारे जितने मैंने लेटर्स भेजे थे वो सारे वापस आ गए. टू गो, the first she opened it, then pasted back again the envelope, but the rest she didn't even open. कहता है कि उसने कुछ पहला जो था उसने पढ़ा, उसको खोला, उसको वापस कर दिया, क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि ये रोज़न का एक हेल्प करने का तरीका था. ठीक है, सो
उसने जो बाकी थे वो खोले भी नहीं और सारे के सारे वापस आ गए. Here, I said to myself, it is a very strange thing. A person that you can never give her anything, but I will give. कहते हैं कि कितनी स्ट्रेंज थिंग थी कि आप एक पर्सन को, एक शख्स को हर चीज़ देने की कोशिश करो लेकिन उसके बावजूद आप दे ना सको. सो बट आई विल गिव, लेकिन मैं उसको दे के रहूँगा. आई वेंट देन टू माई लॉयर एंड वी मेड आउट अ विल दैट एवरीथिंग आई हैड, all my investments, my 2 houses that I owned, also furniture, my car, the checking account, every cent would go to her, and when she died, the rest would be left for the 2 girls. So, students, look at his heart, that he was so sympathetic to that widow. ठीक है, उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की. इवन ही यू कैन से मेड अ विल, एक उसने अपनी विल वसीयत तैयार करवाई जिसमें ही ऑल द प्रॉपर्टी दैट ही ऑन्स, तो बेटा जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी उसने उसके नाम थी, रोजन के नाम, ही ट्रांसफर्ड टू एवा, उसने एवा के नाम कर दी. और व्हेन शी वुड डाई, आफ्टर हर डेथ, ऑल द प्रॉपर्टी वुड गो टू हर गर्ल्स. The same with my insurance, they would be my beneficiaries. बेटा beneficiaries here और receiver जिसको हम वारिस कहते हैं, जानशीन कहते हैं, उसको beneficiaries इंग्लिश में कहते हैं. Then I signed and went home. In the kitchen, I turned on the gas and put my head in the stove. और बेटा उसने घर आके क्या की कोशिश की? He tried to make a suicide. उसने जो है वो suicide करने की कोशिश की. ठीक है, he turned on the gas and put my head in the stove. और stove में जो है वो उसने अपना सर देने की कोशिश की. ओके, और बेटा उसने क्यों क्यों सारा कुछ किया? बिकॉज ही वॉज सो मच हेल्पलेस, ही वॉज सो मच डिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा वो मायूस हो गया था. दैट ही ट्राई टू हेल्प हर इन एवरी वे बट शी कंटिन्यूसली रिफ्यूज. सो लुक एट द एंड, दैट व्हाट हैपन्स एट द एंड. लेट हर से नाउ नो, कहता अब उसको नो कहने दो. नाउ शी कैंट डू एनीथिंग, अब तो वो कुछ भी नहीं ना कर सकती क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, अब वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी. Davido, scratching his stubbed cheek, nodded. This was the part he already knew. He got up and before Rosen could cry, no, idly raised the window shade. कहता है कि अब जो है वो डेविडो को उसका जो कि पता था लास्ट में क्या हुआ था. So he did not write anymore and he got up and before Rosen could cry. कहता कि वो उठा इससे पहले कि रोजन कुछ रोता या बोलता. आइडली रेज द विंडो शेड, तो उसने जो है वो विंडो शेड को ओपन कर दिया. इट इज़ ट्वाइलाइट इन स्पेस बट अ वुमन स्टूड बिफोर द विंडो. लाओ लुक एट द एंड ऑफ द स्टोरी बेटा, कि एंड में क्या होते हैं कि शी आफ्टर रियलाइजिंग हर मिस्टेक्स शी केम टू रोजन. And now why she came to him? Because she wanted his help, because she was out of job now. उसका जो बेटा स्टोर था it was not working and her girls they were starving. वो starving कर रही थी, फाके कर रही थी, and there was she had nothing to give them to eat. So in a helpless condition she came to Rosen. But how he could help her now? Because he tried to help her in every matter, in every way, but she continuously refused. ठीक है बेटा. So it is twilight in space but a woman stood before the window. Rosen with the bound was off his cot to see. अब वो बेटा वो अपनी कोट पे ही बैठा था, वो नहीं उठा उसको देखने के लिए. She raised her, it was Eva, staring at him with haunted beseeching eyes, beseeching means requesting eyes. She raised her arms to him. Infuriated, the ex-salesman shook his fist. अब बेटा उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था. Infuriated in a rage, in an anger. ठीक है, उसने अपनी shook his fist, अब उसने अपने जो है वो बेटा मुट्ठी जैसे हम कहते बंद की या लहराई, बहुत उसका गुस्से में था. ओके, whore, bastard bitch, he shouted at her, go away from here, go home to your children. Davido made no move to hinder him as Rosen rammed down the window shade. ओके बेटा उसने जो है वो उसको पीछे हटाने की कोशिश नहीं की क्योंकि रोजन ने विंडो शेड जो था वो नीचे कर दिया था. सो बेटा दिस वाज अ पैथेटिक or you can sorrowful end of the story, that in the end he was helpless because he tried his every you can say attempt. ठीक है, हर कोशिश की उसने उसकी हेल्प आउट करने की, but she refused and in the end she was in need but he refused. So you can say a decision on time is very important बेटा. ठीक है, if a person is so बेटा she I think she should you can say
take his help, because she was in need at that time. She had two little daughters who needed money, who needed food, who needed clothing, who needed a residence to live. So I think by putting aside her ego, she should accept Rosen's offer. So beta, this was the end of the story, and I hope you have well understood it. And if you beta don't understand anything, you may ask me. I would wait for your feedback. And beta, till tomorrow, stay blessed and Allah Hafiz.